Sajid sir, am I audible clearly? Yes, ma'am, you're absolutely clearly audible. And I say like we're already half the mark crossed. There are already around 55 parents we have with us. So it seems like going to be a good session. Yes, it will be. And they have started joining soon. Yes. Okay, it's 46, 47. Nice. Good evening, Sandeep sir. Good evening, ma'am. I just spoke to the chief guest, resource person, and he's ready. He's going to join us within 2 minutes. Let's hope few more parents would be joining. All right. Even I would request the students that please remind your friends to join the session. This session is going to be very useful, memorable. Okay. So, students, you have 2 minutes time. You can leave the session for some time for 2 minutes, like I did, and remind your friends to join it. At the same time, I would request that please do not leave, you know, in a short while. Leaving, joining is not good. Okay, so the best way is that you inform your friends and family that you are busy from this time to this time. Okay, maybe tentatively 8 o'clock to 9 o'clock today for such and such purpose. That is a good way of, you know, uh, avoiding the call. Fine, we also do like that. Anyway, let's hope that our resource person, Dr. Rama Raju, would be joining very soon. And then as soon as he joins, we start. Okay. Our vice chairman sir also has joined. Welcome you, sir. Yes, good evening, sir. Thank you so much. Good evening, teachers, Good respected evening, parents. sir. Good evening, sir. Good evening, So, sir. Good uh, evening, sir. IT department, anybody is here? Good evening, sir. Yes, Good sir. evening, sir. Okay, good, good. Harpreet sir is here. Yes, sir, I'm here. Okay, good, good. Thank you so much. Thank you. All the best, sir. Thank you. Thank you so much.
I would like to request all the parents to please stay till the end of the session. కొంతమంది వచ్చింటారు కదా జాయింట్. Good evening, Dr. Saab. యా గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. Yes, let me put the video on. యా Thank you so much. నమస్తే నమస్తే. Okay, after Good evening, long sir. time to see you. యా ఎస్ సార్. All our parents, teachers, they're all waiting for you. Even our Vice Chairman, sir, Satnam Chawla, sir, is here in the session. So, sir, ఎస్ సార్. with your permission, can we start? ఎస్ సార్, ఇట్స్ మై గ్రేట్ ప్లెజర్. Thank you so much, sir. So, now over to the host, our teachers, please Yeah. start. Good evening, sir. I welcome you to this session. యా గుడ్ ఈవినింగ్. Someone has rightly said, science and spirituality are the same. They just have different dialects contained within them. Honorable Chairman, sir, Vice Chairman, sir, High on Honor Principal, sir, Vice Principal, ma'am, our chief guest of this motivational session, Dr. M.S. Rama Raju, worthy teachers, parents, and my dear students. Good evening, all. This is Rajdeep Seni, conveyor for the evening. I request Mr. Mohammad Sajid, sir, to introduce us with this session. A very convenient evening to you all. Well, thank you so very much, Rajdeep ma'am. It already seems to be an incredible beginning, quite on high in energy. Thank you so very much. Well, it is indeed my honor and privilege to welcome the honorable dignitaries joining us in this session. To begin with, Honorable Chairman Sir, high on regards, incredibly kind and humble and generous Vice Chairman Sir, the epitome of wisdom, if I may say. It's such a pleasure and honor to be working under him, our principal sir, a shining beam of light, if I can call, loved by each and everyone around her, a walking, talking aura of positivity, a vice principal ma'am, our chief On guest of screen. the evening, Dr. M. Sri Rama Raju. It is such an honor, sir, to have you among us. It is such an honor. We have been hearing about you for the last few days, and we were so excited to get to meet you. So I believe that whenever we join a room or we're sitting on a table, we do not sit as an individual, but we represent who we are as a community, as a culture. So it's a greeting from North to you, to the man from South. I may try. Namaskaram, Dr. Ramaraju. GRD నమస్కార్ జీ, పాఠ నమస్కార్ నమస్కార్. పాఠశాలకు స్వాగతం. మీ ఉనికిని చూసి మేము సంతోషిస్తున్నాము. ఓ I వెరీ hope it was నైస్, a వెరీ నైస్ bit తెలుగు. better. వెరీ నైస్ Thank you తెలుగు. so much. Thank you so much. So it will be my pleasure to introduce the session that we have today. It's so relevant, Rajdeep ma'am, the discussion that we have. It talks everything which is so relevant in the current times, that is science, is spirituality, and how both of these can, impact bringing up the kids in the modern times, and how we can inculcate, the values of patriotism and love for motherland in the times when we see people, having their difference of opinions when it comes to liberalism or nationalistic ideas. It's so important. And here I would like to just bring the background. India has always been a center for spirituality, rich heritage, various ancient civilizations. It has been a center and an origin place for great world religions like Hinduism, Buddhism, Sikhism, Jainism, and also as Maulana Azad said once, that it is the destiny of this nation, of its mountains and the rivers, that people from around the world will flow towards it. That's how Christianity and Islam even come up here. It has always been quite famous, and has
contributed so many ways towards yoga and spirituality, and kind of it got termed as Eastern world. At the same time, the human of East is great with the spirituality. At the same time, we had another man which existed kind of Western world, which consisted of modernization, technology, advancement. So today, when we are here to talk about how we bring up the modern kids in a better world, that is, I think, what we discuss. Parents basically is how we inculcate the best of the Eastern and the Western world and build a great human being as your kids individually. And that's what we have among us to discuss today for Dr. Ramaraju. Such a pleasure, such an honor to have you among us, sir. With this, I stop myself. Thank you so very much for the honor to introduce this session, Rajdeep ma'am. Over to you. Thank you, Sajid sir. I would like to extend our gratitude on behalf of everyone to the head of this institution to bring us to the company of a person of such a stature. Thank you so much, Principal Sir. Talking about Dr. M.S. Rama Raju, indeed, he is the epitome of what a truly scientific man should be. His crown is well decorated with shiny achievements. I would like to take you all through the glimpses of his incredible voyage. Dr. M. Sri Ramaraju hails from Hyderabad, Telangana. He is a qualified PhD in Biochemical Engineering, Institute of Technology, currently IIT Banaras, Hindu University, Varanasi. He is professionally an agricultural scientist in plant nutrition management with a work experience of over 30 years. He holds the responsibilities of educating the Indian farmers through national program Kheti Sudhar and NBF, Nutritionally Balanced Farming for Better Crop Yields, manufacturing of quality nutrition fertilizers for the Indian crops, running a company, Sri Shaktivel Crop Technology at Hyderabad, technical consultant for many agricultural companies. He started national program Admi Sudhar and HBF, Happy Balanced Family, for the Indian families to restore the happiness in their homes, counseling the young generation to make them strong, intellect to handle the life problems through Vedic principles applications. Presently consulting International Agriculture Project in Benin, West Africa. He wishes to help the Indian farmers for the self-sustainable agricultural yields without disturbing the soil health. Also, to make maximum Indian families an HBF, that is, happy families. With this now, may we have the honor to request our Honorable Principal Sir, the head of GRD family, to address us with his keynote. Please, sir. Thank you so much, Rajdeep ma'am. Thank you, sir. Good evening to everybody. Honorable Chief Guest and resource person, the guest speaker of this session, very, very respectable and honorable Dr. M.S. Rama Raju, who is a scientist, our Chairman Sir of GRD International, Vice Chairman Sir Satnam Chawla Sir, Vice Principal Ma'am, respected coordinators of GRD, respected teachers of GRD, respected parents of grade 8, 9, 10. Only 8, 9, 10 we have invited today due to technical reason. And my dear children, I welcome you all to this online motivational session for the parents. As you know, this session is for the parents whose children are studying in GRD International School in class 8, 9, 10. Profile of Dr. Ramaraju has been read out by Rajdeep ma'am. That's a brief. If I talk of the profile of Dr. Ramaraju, it will take hours. In short, what I like to tell you that Dr. Ramaraju, basically from Hyderabad, he did his education and PhD
from BHU, now IIT, and he is extraordinary consultant and scientist to improve our agriculture system. I know him personally. He's my friend, he's my brother, he's my well-wisher. He is a person who believes in simple living, high thinking, and he practices that. दो चीजें होती है, एक तो केवल फिलोसॉफी दर्शन में हो, बातों में हो, थियोरी में हो, और प्रैक्टिकल में ना। डॉक्टर रामा राजू ऐसे हैं जो उसकी मूर्ति हैं, जो कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, कहते हैं और करते हैं। और मैंने देखा है उनके कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जो कहते हैं वही वो करते हैं। एंड ही हैज ट्रेवल्ड अ लॉट, बहुत सारे कंट्री में गए हैं, वहां की जो अच्छी चीजें हैं वो मुझसे शेयर करते रहते हैं। तो मैं बहुत दिनों से डॉक्टर राजू से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप हमें हमारे बच्चों के लिए कुछ टाइम दें। मैं चाहता था फिजिकली जीआरडी इंटरनेशनल में आके हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को डायरेक्टली एड्रेस करें, फेस टू फेस। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लॉकडाउन ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। फिर हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़े से टाइम निकालें हमारे लिए ऑनलाइन। आई एम ग्रेटफुल टू हिम दैट in spite of his busy schedule, he has spared time for us. We are grateful to you. We are grateful to you. Thank you so much. Thank you so much. And Dr. Sahab is always thinking about how can we strengthen the youth. आजकल के जो बच्चे हैं, जो जवान हैं, बच्चे एक दिन जवान होंगे, बड़े होंगे और यहाँ इस देश के सिटीजन बनेंगे, नागरिक बनेंगे। तो उनकी चिंता रहती है कि बच्चों को, यूथ को कैसे ट्रेन किया जाए, कि कौन सी शिक्षा दी जाए इनको, कैसे इनको गाइड किया जाए कि ये अपने देश के लिए एक बहुत अच्छा नागरिक बने, भारत माता का नाम हो। इसके लिए हर समय वो हमसे डिस्कस करते रहते हैं, हमारी डिस्कस उनसे चलती रहती है। आज एक हमें अपॉर्चुनिटी मिला है कि डॉक्टर राजू हमारे पेरेंट्स को एड्रेस करेंगे, क्योंकि एजुकेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग हो गए स्कूल टीचर्स, एक है हम और एक दूसरे है पेरेंट्स, और तीसरा सोसाइटी भी है, एंड ऑफ कोर्स चाइल्ड इज देयर, चाइल्ड सेंटर्ड एवरीथिंग। तो पेरेंट्स एक बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट की रोल है आपका। आप स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें साझीदार है, और हम लोग तो हैं ही, हमारी भी चिंता बनी रहती है। मैं हर टाइम, हम लोग टीचर से डिस्कस करते रहते हैं, टीचर से कभी हमारी कुछ बातों पर डिस्प्यूट भी हो जाती है, एंड कभी आप टीचर से बात करेंगे तो आप पाएंगे ये केवल बच्चों के भलाई के लिए हमारी डिस्प्यूट होती है, या साधारण भाषा में कहीं उनसे लड़ाई हो जाती है हमारे टीचर से, कभी कभी हमसे नाराज हो जाते हैं, कभी मैं टीचर से नाराज हो जाता हूँ। केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों की भलाई, बच्चों की वेलबींग, उनका फ्यूचर। तो आज हमें डॉक्टर राजू हमें बताएंगे कि हम पेरेंट्स को, मैं भी पेरेंट्स हूँ, मुझे भी बताएंगे कि पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, बच्चों को कैसे हमें शिक्षा देनी चाहिए, कैसे हमें केयर करना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रूमिंग, टू ग्रूम द चिल्ड्रन, टू ब्रिंग अप द चिल्ड्रन, कि वो कल को अपने मम्मी पापा के सबसे अच्छे बच्चे बने, आज्ञाकारी बच्चे बने, संस्कारित बच्चे बने, अपने मम्मी पापा की सबसे पहले उनकी सेवा, फिर देश की सेवा करे, भारत माता की सेवा करे, और साथ ही साथ हम भारतवासी, हम विश्वास रखते हैं वसुधैव कुटुंबकम में। हम इतने स्वार्थी नहीं है, भारतवासी कभी स्वार्थी नहीं होते। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा कुटुंब है, दे आर ऑल, एंटायर वर्ल्ड इज आवर रिलेटिव। तो ये बच्चे केवल इंडिया ही नहीं, सब पूरे वर्ल्ड में जाके हमारे देश का नाम करे, और थोड़ी सी मेरे यहाँ लालच है, जीआरडी का भी नाम करे, रुद्रपुर का नाम करे, उत्तराखंड का नाम करे। तो डॉक्टर साहब इस पे हमें बताएंगे बहुत सारी बातें, और हो सकता है एक सीरीज में ना हो। ये मैंने आपको कहा था, आपसे इंटरेक्ट किया था कि डॉक्टर साहब की बातें सब समय समझ में नहीं आती, बहुत हाई लेवल की होती है, तो ध्यान से सुनिएगा, और नहीं समझ में आए तो फिर आप हमें कहेंगे तो मैं फिर डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, जब डॉक्टर साहब फ्री होंगे तो फिर आपसे इसी तरह बातचीत होगी। और
जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर मैं डॉक्टर साहब को हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा हूँ और उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिजिकली भी कभी जीआरडी में रुद्रपुर आके कभी फिजिकली हमारे पेरेंट्स को थोड़ी सी 1 घंटे का टाइम दे, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू एवरीबडी। ओवर टू राजदीप मैम, गॉड ब्लेस एवरीबडी। Thank you so much, sir. You leave no stone unturned when it comes to providing the best you can to GRD students and parents alike. For instance, today we sit in the company of Dr. M. Sri Rama Raju. Now, if we can be so honored to hear Dr. Rama Raju with his motivational words. Please, sir. Excuse me, sir. Please switch on your mic. It's off, actually. Hello, am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yeah, Thank you. Yeah, so network is little poor here. I am in the form now. Now the local time is 4:04 p.m. now, and I am very grateful, thankful to all of you, and especially my good friend of mine, Mr. AJ Bhatt sir. We are very close friends at that time when I was in Kashipur, when I was doing my project, and I am grateful to the sir and the team and all the parents and kids and the students to join in this class session. Since last week we were discussing, sir was discussing to have a session. Actually, I want to be physically present there in Kashi, in Rudrapur. So many times we planned it, but unfortunately I could not make it. मैंने बहुत बार कोशिश किया था आने के लिए, लेकिन उस टाइम पे ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मेरा पहला प्रोजेक्ट है अभी जो टोमेटो जो हम कर रहे इधर. आई एम इन द फॉर्म राइट नाउ. टाइमिंग्स इज 4.5 hours बैक हियर. सो आज ऐसे ही मौका मिल गया, तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टुडे to address my beloved children and their parents. Whatever knowledge I gain in my experience, just I will share. And when I come to the Rudrapur physically, I will share more and more with a lot of examples and a lot of quotes and all to educate the new young generation to the hope of India. Actually, the Bharat की जो future है, the youngsters है. लेकिन पता नहीं क्या हो गया. पिछले में I am the bridge. Our age people are bridge to the past generation and the present generation. I am looking lot of differences, and I'm very grateful that I'm seeing the both generations, the last 40 years back generations and now present generation. There is a big gap came, and I pointed out the basic problem has gone there. Food, actually, food is the problem in India. Being agricultural scientist, I am in this line for the first 30 years. I am observing the food to the health is lot of changes are there. If you believe or not, whatever this is telling my an experience, that's why I selected this agriculture line, because my intention was to become a professor actually. And before that, I want to become a doctor, MBBS doctor actually. That was my lifetime dream. But मैंने 2 बार एंट्रेंस लिखा तो हो नहीं पाया, लेकिन माइंड में तो डॉक्टर बनने का, एटलीस्ट डॉक्टर के नाम रखने का इच्छुक थी. इसीलिए मैं कोशिश करते 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 आफ्टर शादी मैरिज करने के बाद भी मेरा इच्छा मरी नहीं है. तो जब मैं जॉब करने आया था यूपी में, उस टाइम पे भी फिर जागा था, बीएचयू में चला गया था, पीएचडी हो गया था, ऑल और केम नो इन ए रूटीन वर्क. सो व्हाट आई वांट टू से इज इट इज द इंटेंशन, द स्ट्रॉन्ग डिजायर towards your dream definitely will success. This is the first point I want to teach the students. Strong desire from the beginning, childhood. After intermediate, my strong desire was to become an MBBS doctor. But when I could not get it, at least in front of name, I want to be a doctor.
That was desire made me, even after 20 years, I got the degree. When I got the degree, my total जो है तृष्णा बोलते हैं ना वो पूरा सैचुरेट हो गया. I was very happy on that day when I got the awarded degree. At least नाम के before जो है डॉक्टर हो गया. फिर basically I'm a botany student from the beginning. I love plants very much. Basically mine is agriculture family, and because of that reason, there was a duality when I completed my PhD. There was a duality where to go, what to be career in the future. Before that, I was already working with the farmers, and then I thought that this is not my line. This is a very hard worship. I can't do it. So after PhD, go to the student to teach. But in university, the politics, the students and I didn't like it. So at that time, already I had experience with the farmers. Then I decided my career. So as a agriculture scientist, because I'm not AGBSc or agriculture science, I have not done, but basic fundamental science of basic BSc, botany. Botany is the basic fundamental thing for agriculture, to know study the plants and everything. So I have post graduation in biotechnology, botany is there, and PhD is there. So all these things, I converted my career to the agriculture now. So I already passed through the 30 years experience now. I'm very happy in my career. Now I start what to be done as a student. क्या करना चाहिए, इसके लिए responsibility कौन है? अगर एक student अच्छी तरह से अपने जीवन की संभालना चाहते हैं, जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो what is the basic reason to behind him? This I came to know that until I got my guru in Varanasi. Before that, I was normal. I was nothing to know. I was ignorant. When I got my spiritual guru in Varanasi, then only मैं को जीवन क्या है, कैसा जीना चाहिए, सारा चीज मेरे को सीखने के मौका मिला. So my guru was Swami Jnanendra Saraswati in 1990 in Varanasi. On the Shivratri day, I met my guru. I thought that साक्षात ईश्वर के ही मेरा कृपा मिल गया on that day. So it's in 1990. After meeting Guru only, life has changed. The thinking process, thought process. Fortunately, I got Sadguru. Nowadays, maybe आप लोग देखते होंगे, बहुत से लोग गुरु बन के आते हैं और दिखावा दिखाते रहते हैं, और जो है रॉन्ग गाइडेंस अपनी जो कमर्शियल की लेकर चल के बहुत से ये सब चल रहा है इंडिया में. That is we can't do anything because it's the nature with the public and they are also. So fortunately, I got Sadguru and I learned so many things from Vedic sciences. That Vedic sciences converted into my agricultural life sciences. Being a scientist, I utilized the Vedic principles in the science and as well as in my life also. In this brief session, 1 hour, it takes a lot of time to explain all these things. When I come physically, I will explain you. But in the very, very shortly, I will brief it, and at least you can have some basic ideas about their life, how to be lead, actually. So now, what is the life? What do you mean life? What is the meaning of life? Many people will confuse with this word. It's a life क्या होता है? जीवन क्या होता है? केवल enjoy करना जीवन है? केवल जीना ही जीवन है? What does it mean? L-I-F-E, life. Abbreviation, I think dictionary भी मैं देखा नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से coin किया है. Life has two faces actually. L-I-F-E. Live inside forever. One is there. Then the second one is live in forever enjoyment. L-I-F-E. Which will be better? It is depend upon the person interest. Is life is for enjoyment or life is for that he can apply it for the eternity also, live inside or eternity. These two things are very important. I opted life is inside eternity because I got Guru. That's why there are a lot of things can be known when you travel inside. These are two things for the life. Those who go enjoyment is outside world. Outside world always it is a duality. Dvivida.
क्या करूं क्या नहीं करूं कैसे करूं। इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों के लिए एटलीस्ट पर डे 10 मिनट्स ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए जरूर प्रोत्साहित किया जाए। ये सारी एक्टिविटीज, द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इज मदर, द सेकेंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज फादर, द थर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द टीचर. Maybe teacher is here, we can take the teacher or guru or upadhyay. There are three terminals as referred by the shastras. Not all equal. They have different categories. Okay, guru is different, upadhyaya is different, and teacher is different. Teacher, upadhyaya one, and the guide is different. They have their different roles. Before all this to be concluded, I want to be just two incidents in my life, how I become like this, then I will proceed it. The first incident was when I was working, how I selected the career. This will help you. ये आपको बहुत अच्छा उपयोग होगा बच्चों के लिए। आपकी कैरियर किस में सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत लोग किसी कॉपी करते हैं, अरे वो डॉक्टर बन गया मैं भी डॉक्टर बन जा चाहता हूँ, वो इंजीनियर बन गया ये भी इंजीनियर, ये करोड़पति बन गया मैं भी करोड़पति। दिस इज ऑलवेज रॉन्ग कॉन्सेप्ट एक्चुअली। आपकी अपनी शक्ति को भूल के किसी को नकल मारना, कॉपी करना हमेशा डेंजरस है। नेवर डू दैट वर्क। यू सर्च, आपने अपने भीतर जाके आपकी तृष्णा, जो इंटरेस्ट है, द पर्पस ऑफ लाइफ, जिसके लिए आपने जन्मा है, उसको बाहर लाना बहुत जरूरी होता है। ये तभी पॉसिबल होगा या तो आपको गुरु की साथ मिले या खुद अपने अंदर जाके मैं क्या हूं, क्या करना चाहता हूं, कैसे सेटलमेंट करना चाहता हूं, उसको बाहर लाना बहुत जरूरी है। ठीक है। या कोई घटना घटती है आपकी लाइफ में, अर्ली बच्चे वाली जो अर्ली जीवन में जो घटना घटती है, वो आपके माइंड में बहुत अच्छा मुद्रा ला सकता है, मतलब परमानेंट इंप्रेशन। उसके लिए भी आप कैरियर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे जीवन में जो घटना घटी, वाई आई एम सेलेक्टेड टुडे इंडियन फार्मर, एक घटना से मैंने ऐसा कन्वर्ट किया। मैं जब जॉब करता था, जब मेरा हिंदी भी नहीं आता था, जब हैदराबाद से आया, मैं एक्चुअली एग्रीकल्चर में मैं जॉब करना नहीं चाहता था, बिकॉज आई एम ऑलवेज नो वांट टू बी लिव ऑन माय ओन अर्निंग्स एंड माय हार्ड वर्क। नेवर आई थॉट अबाउट जॉब। हम लोग खेती किया था, खेती में बहुत नुकसान हुआ था। पिताजी ने बोला आप खेती बंद करो, आप जाके अपने कोई नौकरी करो। उसी टाइम पे एक प्राइवेट कंपनी में जो है एक इंटरव्यू छोटा लेके मैं जो है यूपी आना पड़ा। यूपी में आने के बाद हिंदी नहीं आता था, खाना ठीक नहीं था, लेकिन ये एक दृढ़ निश्चय था, मैं आया हूं वापस नहीं जाऊंगा, क्या कुछ भी हो जाए। ये मेरा जो परमानेंट इंटेंशन जो है, डिटर्मिनेशन मेरा बहुत है। बचपन से मेरे को ये कोई भी काम करेंगे तो बहुत डिटर्मिनेशन करके इसको कंप्लीट करके दूसरा लेंगे। ये डिटर्मिनेशन, मेरे कितना भी तकलीफ हो, मैं वहां एक 6-7 महीने काम किया था। उसके बाद मेरे को थोड़ा बहुत ठीक नहीं लगा, क्योंकि ये इसको मैं इतना एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ के क्या ये फील्ड में घूमना, ये सब जो है फार्मर के बीच जाना, ये सब जो है ठीक नहीं लगा। तो तभी तो मैं थोड़ा और भी पीएचडी तक जाने के लिए कोशिश किया था। लेकिन एक दिन अचानक एक घटना घटी थी मेरे लाइफ में। एक दुकान में बैठा था, एक फर्टिलाइजर शॉप में बैठा था। वहाँ एक बहुत बूढ़ा किसान, मतलब बहुत ही मतलब ओल्ड एज, अराउंड 70 to 80 years, विद फटा हुआ कपड़े से, वो किसान आके दुकानदार से पूछता है, मेरे को एक खेती में पीलापन आया, एक दवा दे दो। उनको पता भी नहीं कौन सा दवा पूछना है क्या है। तो ये जो डीलर जो है एक कीटनाशक पकड़वा दिया उनके हाथ में। मैं तो उस टाइम पे बॉटनी तो पढ़ा था, मैं तो सब्जेक्ट तो है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं था। लेकिन मैंने सोचा था पीलापन बोल रहे हैं, पीलापन तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी भी हो सकता है, ये कीटनाशक दे रहे हैं, ये तो कुछ गड़बड़ है। तो मैं उनके फॉलो किया था। वहां जाने के बाद जिंक डेफिशिएंसी दिखा था मैंने पेड़ों में पीलापन की। देखिए इधर मेरे को टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं था। ये सच है क्या नहीं? इसलिए बुक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज एंटायरली डिफरेंट। If you want to conclude the matter with the theoretical knowledge and the practical, it never matches actually. It only a base support how to identify, but treatment everything should be practicality. Okay? Then उस किसान को बुला के लाया वापस एंड दुकान में उनको जिंक की दवा दिया था, वो ठीक हो गया 10 दिन के बाद।
तो वो एक घटना जो मैंने सोचा था, अरे एक किसान के साथ अगर इस तरह से होता है, पूरा इंडिया में कितने किसान को, क्योंकि किसान को तो पढ़ाई है ही नहीं, क्योंकि दिस इज द ओनली बैड सिचुएशन, दिस इज द ओनली डिवीजन इन बैड सिचुएशन वेयर देयर इज नो डॉक्टर एट ऑल. एवरीबडी विल डॉक्टर इन दिस फील्ड एग्रीकल्चर. प्लांट को ट्रीटमेंट कर लिया, प्लांट इज लाइव, देयर शुड बी डॉक्टर. एनिमल्स इज अलाइव, देयर शुड बी डॉक्टर. Humans are live, they're a doctor. But animal husbandry and agriculture, animal husbandry and for medical, there are plenty of doctors. But in agriculture, everybody doctor or no doctor. Okay? At this situation, that incident made me, in future, if I want to set right my career, let us work with the farmer. That day, the seed has sown in my mind, actually. At least that is, see, I have to do service. Being a citizen of country, somewhere, somehow, I have to help my country. I want to become an IAS officer, may not be. I want to be collector, may not, IPC officer, or anything, or a minister, or anything. But later on, I realized, बाद में मैं realize किया था, देश की सर्विस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई पद नहीं चाहिए. आप वैसे ही अपने कैरियर को, टैलेंट को, देश को प्रयोग कर सकते हो. ये मैंने रियलाइज किया था. ये कोई जरूरत नहीं है आप कलेक्टर बन के देश की सेवा करें, कोई सिपाही बन के आपको कोई सेलेक्ट करे. ये डिपेंड अपॉन योर टैलेंट एंड क्वालिफिकेशन एंड योर. बट इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर बीइंग ए सिटीजन to support the country, to support the society, support the family, support the nation, you can select anything, whatever you live. So I selected agriculture because this is a prime sector. Without food, no human life is there. After air and water, then food is the basic thing. Anything can be closed, but food cannot be closed as life is on the earth. That's why I selected this line. Then after taking this decision, you don't believe, complete 6 months, 20 kilometers I traveled in the field to study and experience the practical knowledge. That hard work now is helping me for my career. So then I studied the farmer mentality, everything studied in that my 6 months. You can imagine being from Hyderabad without knowing knowledge in उसके language पता नहीं, खाना की जो है कोई नहीं है, लेकिन मैं उधर दृढ़ निश्चय था किसी न किसी तरह से we have to learn the subject. मैंने फील्ड में पैदल पे, it's a matter of 1992 I am talking about. At that time transportation, you can imagine how difficult is there. So क्या बता रहे मैं आपको सारे पेरेंट्स को, बच्चों को हमेशा never ever think that मेरा बच्चा सुख से रहे. This is the first fault you are doing. जितना सफर करे, जितना टफ सिचुएशन फेस करे, उतना अच्छा है उसके जीवन के लिए. He will become a gem. If you make them soft, very pleasant, very comfortable, definitely they will never face the problems in situation in the future life. This I strongly can advise to the parents. Let them face the tough situations. Let them face the hardest situation. If अगर उनको एसी नहीं है, रहना रहो बेटा, ऐसे रहो, एसी का तो उसको बर्दाश्त करो. तो इसमें क्या होता है, जीवन में क्या क्या डिफिकल्टी से आता है पता नहीं है, कितना टफ सिचुएशन आता है पता नहीं है. ये जो ट्रेनिंग है उसको एकदम जम बना देगा. आजकल देख रहा हूँ बच्चों को, कुछ भी चीज के लिए अगर एग्जाम में फेल हुआ, इन सुसाइड, अगर मार्क्स नहीं हुआ सुसाइड, या घर से भाग रहे. ये क्या दुर्दशा है, मुझे समझ में नहीं आता है. इसलिए आई एडवाइज द पेरेंट्स, डेफिनेटली वॉच, डेफिनेटली उसको जरूर ऑब्जर्व कर लेना. जो कठिनाई फेस कर रहा है उसको बीच में ये बाधा नहीं पहुंचाने की, इसको करने दो. अगर कुछ मनमानी करता है तो नहीं, उस टाइम पे रोक दो. अगर उनको सपोर्ट करोगे, he will become soft. Just like we are soft by the food nature, soft by the habits, soft by the all the things, thoughts. This pandemic situation ruined, disaster the country because we don't have strength to face the problems, challenges. So, okay, for all these things, I want to start my session now, exact session, the 2 incidents. The second incident, I will advise one by one how to begin. Second advice, a second incident I got in my life. When I completed my PhD, I went to my guru, Swami ji, मैंने PhD किया है, अब मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, अमेरिका में जॉब करके वो मैं उधर चले जाना था, अब तो मेरे को आशीर्वाद दे दो. सारा मेरा वीसा के सब रेडी था.
ठीक है बेटा, अब कल आ जाना, मैं आपको बताऊंगा कैसा करना क्या है। ठीक है, मैं अगले दिन गया था। अब बताए स्वामी जी क्या करूं मैं तो अब बाहर जाके फॉरेन में सेटल में, भाई आप पीएचडी तो हो गया, बीएचयू से मैं जॉब कर सकता हूँ, मैं जो है अच्छा जीवन जिंदगी सीखता हूँ। उस टाइम पे एक कोटेशन मैंने को बताया, एक कोटेशन, दिस आई फील इट इज अ कोटेशन ऑफ दिस सेंचुरी, एंड इफ पॉसिबल अगर मौका मिले तो मैं पूरा इंडिया में एटलीस्ट एक एक सिटी में एक एक कटआउट बोर्ड लगाना चाहता हूँ इस कोटेशन का। बहुत ही पावरफुल कोटेशन है, मेरा जीवन के बिल्कुल चेंज कर दिया उस टाइम पे। क्या कोटेशन है ये? एक्चुअली मैं इधर थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है मेरे को सब दिखाने के लिए, मैं तो फिर जब मैं उधर आ जाऊंगा सब आपको सारी जो है पिक्चर्स दिखाऊंगा मैं। वो कोटेशन ये है, अच्छी तरह से याद कर लेना। अब मैं भट्ट सर को भेज दूंगा, वो भी आप एक मंत्र की तरह आप अपने बच्चों को घर में लगा सकते हो। ये कोटेशन है, करे तो कुछ अलग, जियो तो कुछ मकसद से, यही भगवान को उम्मीद है हर इंसान से। अगर ऐसा नहीं है, इंसान केवल खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना और मर जाता है, तो इतना काम जानवर भी करता है, फिर फर्क क्या है? लेकिन उस टाइम पे गुरुजी ने दो तीन शब्द और यूज किया है, मैं इसे यूज करना चाहता नहीं, तीन जानवर का भी इस्तेमाल किया। जानवर की जगह कुत्ता गधा और सुअर का भी नाम लिया था मैंने इधर आपको। इट शुड नॉट बी गुड फॉर इन मास सेशन, सो आई यूज द जानवर। तो करे करो तो कुछ अलग, इफ यू वांट टू डू थिंग्स डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स, जियो तो कुछ मकसद से। अगर जीना है सोसाइटी में कुछ अच्छा मकसद के जियो, यही भगवान उम्मीद उम्मीद आपके ऊपर रखा है, जानवर के ऊपर नहीं रखा है। ओके, ये अगर भगवान उम्मीद आपके पास रखता है तो करना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं है, केवल खाना पीना सोना, पीना मतलब इधर पानी, खाना पीना सोना, नींद लेना, बच्चा पैदा करना और मर जाना, ये जो चार काम है, इतना काम जानवर भी करता है, फिर आप और उनका फर्क क्या है? तो इतना ही गुरुजी बोल दिया, मैंने समझ गया। अगर मैं फॉरेन जाऊं, वहां तो मेरे को तो सेकेंडरी सिटीजन ट्रीटमेंट किया जाता है, मैं तो प्राइमरी सिटीजन नहीं हूं, तो जो मेरा मन चाहे वो करूं मैं। तो सेकेंडरी सिटीजन, अगर सेकेंडरी सिटीजन मैं कुछ देश के लिए कुछ नहीं कर पाता हूं, तो मैं केवल यही काम करके जीना पड़ेगा फॉरेन में। तो मेरे को तो दिमाग तो जो ये उठ गया, मतलब जो आ गया माइंड में। अब गुरुजी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते थे, मेरे को बहुत मीनिंग आ जाता था उसमें, ज्यादा एक्सप्लेन बात करते नहीं थे वो। हर कोई चीज मौन से या किसी सिग्नल से मेरे को इंडिकेट देते, मैं समझ लेते थे, क्योंकि गुरु का कृपा तो था मेरे पर पूरा, जो उस समय दीक्षा वगैरह दिए थे मेरे को। तो ठीक है स्वामी जी, समझ गया। उसी दिन मैंने 20 आगे से सब कैंसिल कर दिया। नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट गो एज ए सेटलर आउटसाइड द कंट्री, आई कैन गो एंड कम बैक, बट आई वांट टू डू at that time decided, already one incident has happened, former incident. Now Guruji told that be here, and then only I started again agriculture career after PhD and started my own. There is a little bit big story I don't want to discuss here. So now with that motivational dialogue of my Guru, I started now two programs for the country. One is for the farmers, national program Kheti Sudhar and NBF. That is called it is a national. I myself, because I'm authorized person, being a PhD graduate, I can authorize myself to whether government will accept or not, I don't know, but I can definitely know authorized to launch good thing for the country. That much I know, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट क्या करता है मुझे पता नहीं है। ये जो नेशनल प्रोग्राम खेती सुधार NBF and nutritionally balanced farming, there is a lot of confusion in agriculture, organic farming, biofarming, geofarming, like the so many people are confusing the farmers. So with all these things, because I'm a nutrition specialist, because my subject always the plant nutrition, I'm very strong in that subject. From the career point of view, I am very much interested and maximum spent for that nutrition. Now I am studying with the human nutrition diet also. For that I started on program. Even this NBF, I am starting program for the cancer patients in Batinda, Punjab. Batinda, Punjab is the maximum cancer patients. Without medicine, with the nutrition only, I want to treat them. I want to select the people. If in our families, कोई भी अगर है तो मेरे को एक केस जो मैंने फूड्स में प्रेजेंट करूंगा, मैंने डाइट शेड्यूल दूंगा, उससे आप मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं।
अभी मैं कोरोना में भी मेरा फैमिली को खुद बचाया इस फूड से ही, ठीक है। तो दैट इज वन प्रोग्राम। रिसेंटली वन प्रोग्राम स्टार्टेड, नेशनल प्रोग्राम आदमी सुधार एंड HBF। दिस इज द, आई होप यू विल बी थिंकिंग एज नो, थोड़ा फनी लग रहा है ये जो नेशनल प्रोग्राम है आदमी सुधार। जैसा खेती सुधार करते हैं, आदमी के सुधार की बहुत जरूरी रह गया आजकल इंडिया में। तो जितना लोग जो अपना जो समय सेल फोन पे ये सब में जो, और जो बॉडी को जो जो भूल गया है, बॉडी के जो विधि विधान, जो शहद की जो धर्म है, 3 धर्म होता है, समाज की धर्म, प्रकृति धर्म और शरीर धर्म, 3 होता है। भगवान क्लियर कहा है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। अब सबको याद है, जब जब धर्म की हानि होता है वो किसी न किसी रूप में आके सेटरेट करके चले जाता है, चाहे वो कोरोना वायरस हो या किसी वायरस हो। प्रकृति धर्म यानी प्रकृति को जो विनाश पहुंचाते हैं, प्रकृति मतलब विनाश पहुंचाते हैं। समाज, समाज में आतंक फैलाने वाला, समाज में धर की जो है नुकसान करने वाला। अब ये आ गए, मेरे को लगता है शरीर धर्म। हमारे शरीर को इतनी अस्त व्यस्त कर दिया हम लोग, नींद नहीं है ठीक तरह से फूड नहीं है, न्यूट्रिशनल बैलेंस फूड नहीं है, टाइम की पानी नहीं है, पता नहीं क्या क्या करके शरीर धर्म की जब नष्ट हुआ तो हो सकता है इतनी डिजास्टर्स वंस इन 100 years आता रहता है। तो इसीलिए जो है ना, जो नेचुरल प्रिंसिपल्स या वैदिक साइंस में जो प्रिंसिपल्स लाया वो साइंस में अप्लाई करके मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ। ये मैं जब डायरेक्ट आ जाऊंगा तब टेक्निकल्स जो है विथ प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। तो अभी जो 2 इंसिडेंट से मैंने कैरियर अभी सेलेक्ट किया है मैंने, तो परमानेंटली मैं सेटल्ड इन एग्रीकल्चर, and this program I am running in a happy balanced family. In that session only, today I am giving the classes, national program Admi Sudhar and HBF, happy balanced family. This is very very important, happy balanced family. Okay, so why happiness? What does it mean? अगर आपके सामने मैं तीन चीज रख दूं, किसको सेलेक्ट करेंगे आप बता सकते हैं? एक तरह से शांति है, एक तरह से संतोष है, एक तरह से सुख है। किसको प्रेफर कर सकते हैं? विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? एक तरफ से शांति, एक तरफ से संतोष यानी हैप्पीनेस, एंड सुख यानी लग्जरी। Generally, if I put option which you want, maximum people say we want shanti, peace of mind, or people say some santosh. Okay, so in this tenure of this understanding life, we must be very fundamentally, we have to think over it. For this thing, I prepared one subject that is called trifactor theory. This you have to learn in a practical way. This will be very helpful. ट्राइफैक्टर थ्योरी सृष्टि का नियम है, कोई भी चीज काम करता है 3 होता है। इसीलिए मेरा जो मोटिवेशन सेशन में मैं कभी बच्चों को या किसी को जबरदस्ती यही फॉलो करो, ये ठीक है, ये नहीं है, कभी नहीं बताऊंगा। देयर आर 3 ways फॉर यू। वन इज पॉजिटिव वे, नेक्स्ट इज नेगेटिव वे, एंड थर्ड इज न्यूट्रल वे। whichever is like for your environment comfortability, you can select it. Nobody is responsible for it, because there is one special character is given by God. What is that? That's most important. So now the subject little goes to the Vedic principles. According to the Vedic principles, on this earth 84 lakh yoni यानी 84 lakh जीव है इस धरती पे, that is equally distributed land, air and water. Okay, whatever it may, all the species on the earth, water and no Akash, there are 84 lakh yoni. It may be species will be different, but different of yonis, just like humans, animals, plants, different animals. Like that 84 lakh jeev hai is dharti pe. Is as for Vedic principles. 83 lakhs, 99,900 are animals and plants, and one species is human being. This one species, human being, having a special character than other animals. What is that? That is called buddhi, the intellect. See, body, any life, here the 2 things, the living, non-living, life and non-life. Life means only plants, humans and animals. Non-living, remaining things.
You can handle non-life things as like you want, but when handling life, इंक्लूडिंग आपकी बच्चों के साथ भी, बच्चे भी लाइफ है, हैंडल करते टाइम पे यू कैन नॉट फोर्स, यू कैन नॉट इंप्लीमेंट योर थिंग्स ऑन देम, लाइफ विल नॉट लिसन टू अस, लाइफ हमारा बात नहीं सुनता है, लाइफ की अनुगुण जाके उनको मोटिवेट करना पड़ता है। यहां भी एक शब्द प्रयोग किया सब शास्त्रों में, यहां प्रारब्ध एक है, प्रारब्ध, क्योंकि वाई आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, क्यों ये सब क्लैरिफाई देना चाहते हैं, बहुत से फैमिलीज कंफ्यूज्ड है झगड़ा करने में, मिसअंडरस्टैंडिंग करने में, क्रोध करने में, गुस्सा करने में, ये सब कंफ्यूज होके हैप्पीनेस खो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, लाइफ इज वेरी सिंपल इफ यू अंडरस्टैंड, ओनली बेसिक फंडामेंटल्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज फंडामेंटल? लाइफ, प्राण, प्राण किसी का बात नहीं मानेगा, प्राण अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन प्राण जब है कुछ प्रारब्ध कैरी करता है अपने जीवन में भोगने के लिए, वो कोई टाल नहीं सकता है। ये ना जानकर वो भोगते समय पे, मतलब जो उसको कर्म भोगना है आप जबरदस्ती करोगे तो वो तो टालेगा नहीं। कर्म फल अनुभव, यहां जो हिंदू फिलॉसफी में जो कर्म फल है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई life is built with 4 pillars. Life, apart from body, 4 pillars. One is man, any mind, buddhi, ahankar, or chit, karmafal. 5 pillars. These are the 5 pillars which life will run. मन, जो सोचने की शक्ति, प्रचोदक शक्ति बोलते हैं, मन। आफ्टर बॉडी आई एम टेलिंग, body is the physical structure, this body is controlled, all the everything is 5 pillars. One is man, then is buddhi, third is chittam, means the recorder, and the ahankar, ego, that's I, and fourth is karma phal, this is the run by the body. Now what is man? Man doesn't have any rules and regulations, no restriction for it. You can think at anywhere, from sitting here you can go to Chandralok, Suryalok, nobody can stop it. Man, that is the capacity of man, that is chodak shakti, prachodak shakti, that will your acting force, actually no limit for it, you can think anything, maybe positive, maybe negative, but to break it there is given buddhi. This buddhi, intellect, not given to other animals, other living beings, other prana. Buddhi. What is buddhi? Maybe confusing, man and buddhi. Buddhi is brake. If the if the brake is in a vehicle, if the accelerator is man and the brake is the buddhi. Buddhi is intellect. This can discriminate which is good and bad. अच्छा क्या है, बुरा, जो डिसीजन करने वाला ये बुद्धि होता है। जिसने इसको इंटेलेक्ट यूज किया कभी लाइफ में फेल नहीं हो सकता है, मैं चैलेंज करता हूं। जो बुद्धि को काम ना देके मन को काम देता है तो हमेशा वो कोई गारंटी नहीं रहता सक्सेस होने का, क्योंकि मन कहीं भी ले जा सकता है आपको, अच्छे में भी ले सकता है, बुरा में भी ले सकता है, लेकिन उसको नियमित रूप से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। यू कैन नॉट टॉलरेट दी, मन की जो चालन शक्ति आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज बुद्धि? सपोज ये बच्चा घर में बिना परमिशन का पिक्चर देखना चाहते हैं, पैसा नहीं है, पैसा पापा की पैकेट में है। जब ये मन चाहता है किसी न किसी तरह से मैं पिक्चर देख लूं, ये मन की प्रवृत्ति है, ओके। लेकिन पैसा तो नहीं, पैसा पापा के पॉकेट में है। पापा को पूछेंगे तो इसको तो गट्स नहीं है पापा को मना के सिनेमा जाने का, क्योंकि उस टाइम पे एज ऐसी थी, उसको तो गट्स नहीं होता है। लेकिन उस टाइम पे क्या करते हैं, चुरा के ले जाए। जब चुरा के ले जो मन में आई विचार, जो बुद्धि बोलेगा अरे पकड़ेगा तो पापा मारेगा, तो फिर चुप हो जाएगी। फिर मन बोलेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं हम देखेंगे, फिर प्रचोद होगा। इस तरह से करते करते अगर मन ने जीत लिया वो जरूर पापा की पॉकेट में चोरी करेगा, अगर मन ने बुद्धि का बात सुन लिया तो रुक जाएगा। दिस इज द एक्शन इनसाइड द बॉडी, एंड दिस टू थिंग्स एक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द चित्तम। नेक्स्ट कम द चित्तम।
Chitta means just saying the software, the memory power. All these actions will store in chittam. That way हमेशा बोलते हैं, साथ बहुत लोग बोलते हैं चित्त में भगवान की नाम ले लो, चित्त में जो है बहुत अच्छी नाम ले लो, तो चित्त के अंदर जो बुरी विचार है वो सब निकल जाएगा। तो चित्त में जब रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड होके होके स्टोर रहता है, समय आने पर फिर वो मन को बल देता है। और ये सब मन और चित्त को जो पूरा प्रेरित करता है, ईगो, अहंकार। अहंकार, तो अहंकार जब रेज होता है कि किसी का बात नहीं सुनेगा, तभी तो उपद्रव मचता है। तो ईगो इज द, देर आर टू ईगोस, पॉजिटिव ईगो एंड नेगेटिव। मैं बच्चों को ईयर एक क्लियर कट ईगो की बात बताता हूं। ईगो को जो नेगेटिव है, कोई दूसरा बच्चा ज्यादा मार्क्स ले रहा है, उनको किसी तरह से खराब करके मैं आगे निकलूं, दैट इज नेगेटिव ईगो। ईगो खराब नहीं है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका अगर नहीं तो वो खराब हो सकता है। पॉजिटिव ईगो, अगर वो 90 मार्क लेता है, मैं उनसे अच्छी मेहनत करके 95 लेके दिखाता हूं, दिस इज पॉजिटिव ईगो। ओके, ये जीवन में भी अप्लाई होता है, घर में या किसी घर परिवार से या किसी से। जो पॉजिटिव ईगो हमेशा अच्छा है, नेगेटिव कभी डेवलप नहीं करने का। अगर नेगेटिव ईगो अगर मन जोड़ लिया तो आग मचेगी। ये तो जो डेकॉइट्स है या उपद्रव मचल, जो एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज है, ये सब मन और ईगो को ज्वाइन कर लेते हैं, बुद्धि को पूरा भूल जाते हैं। तो ओवरऑल जो इनर साइड जो कैरेक्टर चल रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों का जो प्रतिफल है, प्रारब्ध, जो कर्म फल मिलता है, भगवान का जो बहुत बड़ा वेपन है। पता नहीं, हम लोग आज तक भगवान को देखा नहीं है, तो उनको जो डाल है, सूल है, ये सब हम आंखों से देखा नहीं। लेकिन एक बात सत्य है, भगवान का जो वेपन है, इस कर्म फल देना ही है। इतना आप याद रखिए, कोई बच नहीं सकता है कर्म फल से। अच्छा करेगा तो अच्छा, बुरा करेगा तो बुरा। तो अगर इतना सा सिंपल बात याद रखेंगे, मेरे लगता है सारी झगड़े झगड़े सब खत्म हो जाएगी। एवरीबडी ट्राई टू लिव, बिकॉज अल्टीमेटली आई पुट ए क्वेश्चन, इफ शांति इज इन फ्रंट ऑफ यू, इफ संतोष इन फ्रंट ऑफ यू, इफ सुख इज इन फ्रंट ऑफ यू, विच विल यू प्रेफर? आई आस्क ए क्वेश्चन, कौन सा प्रेफर कर सकते हैं, शांति, सुख या लग्जरी, संतोष? Definitely, most of the time people say, sir, I want peace of mind, शांति। most of some people say, sir, संतोष होना चाहिए। लग्जरी के बारे में कोई नहीं बताया, क्योंकि मन में चाहते हुए नहीं बोल सकते, क्योंकि शांति टेक्स अ टॉप प्रियोरिटी। बट 3 आर डिफरेंट वेज। लग्जरी का थिंकिंग करके शांति को कभी नहीं पा सकते हो, और सुख की जो, संतोष की जो करके सुख की जो प्रकोपना नहीं कर सकते हो, क्योंकि तीनों तो डिफरेंट है। बहुत से जगह मैंने देखा है, आदमी सोचता एक है, करता एक है, ये कभी सक्सेस नहीं होगा। तो वैदिक साइंस में जो पावर जो है, आपने जो होने का पावर बताया, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, केवल 3, मनसा वाचा कर्मेणा। जो मन में सोचता हो, वो बोलते हो, वही करते हो, पक्का हो जाएगी। दिस इज द मंत्र शक्ति, नथिंग एल्स। नो मैजिक हियर, नो ब्लैक मैजिक हियर, ओम रीम फट करने से ये हो जाता है, कुछ नहीं होता है। ऋषि मुनि लोग ने तपस साधना करके अपनी मन को, वाक यानी जो शब्द बोलते हो उसको, और करते हो जो कार्य है, तीनों को एक स्ट्रेट एंगल में लाके वो प्रयोग करते हैं, सक्सेस हो जाता है। आप भी कर सकते हो, लेकिन हम मन में सोचते कुछ, बोलते कुछ और करते कुछ, जो द डिविएशन ऑफ एनर्जी पावर, वर्क सक्सेस नहीं होता है। दिस इज अ सिंपल सीक्रेट। अगर कोई बच्चे, अगर कोई लड़का अपने सोच लिया मैं 90 मार्क्स या 100 मार्क्स, इसके बारे में जिस चर्चा करूंगा, जो ये मार्क सिस्टम है ना, ये भी ठीक नहीं है। मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये जो मार्क सिस्टम में जो लोग कॉम्पिटिशन करते हैं ना, मेरा लड़का टॉपर आया, मेरा लड़का जो है नेक्स्ट टॉपर, नेक्स्ट और से टॉपर, मेरा 99.9 आया, ये ठीक नहीं। एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ टेकिंग द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। आई विल टेल यू लेटर ऑन हाउ टू बी। मार्क से नापा नहीं जाता है आदमी का जो है भविष्य, और उनका ये, उसकी परिश्रम, उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी, उसकी जो सूक्ष्म बुद्धि,
हाउ यू कैन टैकल द प्रॉब्लम इनसाइड, उससे नापा जाता है। आप देखिए कितने भी साइंटिस्ट, जो जितने भी जो पुराना साइंटिस्ट है, वो कोई भी कंपटीशन नहीं था मार्क्स में। मेरे को अन्यथा अन्यथा मेरे को ये मत सोचना डॉक्टर आप कैसे कर रहे हैं। आजकल जो जमाना ऐसा आ गया, मार्क्स की जमाना आ गया, मैं उसको नहीं मतलब मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं। हाउ ये हाउ ए सिटीजन कैन प्रोटेक्ट हिज नेशन unless he doesn't have the guts to handle it. He cannot handle with only marks and qualification, and only the degrees cannot be handled. It's the inbuilt character of guts to handle the situation, become a responsible citizen of the country. He can only handle the situation. For that, marks and qualification never works. It's the strong determination. It's a patriotism. It's a responsibility. Okay, these are the characters should be built up by the father and mother at the early age of the uh, childhood of the from the nursery to up to 11th, up to 12th. +2 is the decision maker for the student, for any student life. +2, up to that period, if he's set right, then you need not worry about your children. I'm telling you, that is the age. There are 4 ages: balyavastha, praudhavastha, Yavvan, Rudhapya. The 4, when we studying microbiology, there is a 4 lanes. So log phase, lag phase, stationary, and death phase. Four lifelines will come. This lifeline is called lifeline. I'm using in agriculture also to design the fertilizers actually. Early age, Balyavastha, Praudhavastha, up to the +2 is the Praudhavastha. This is the very, very fundamental basic life platform. At this time, प्रॉपर समय देके अपने बच्चों के लिए, ये तो वर्ड ठीक नहीं यूज करना, क्योंकि आजकल जमाना लाइफ इतनी व्यस्त हो गया, हो सकता है टाइम ना मिल पाए, लेकिन अगर आप चाहते हो करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। मेरा गुरुजी बताया एक बार, अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या दे सकते हैं एक आदमी को अपने चाहते वाले को, क्या हो सकता है? कोई गोल्ड, कोई प्रॉपर्टी, कोई कार, कोई बेंच, कोई नहीं। अगर बहुत लोग बोलते हैं ना, तो बर्थडे वगैरह में जो है, अरे मेरे इतना बड़ा गिफ्ट दिया, इतना बड़ा गिफ्ट दिया। सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है मालूम है? अपनी लवेबल टाइम गिविंग टू दी, अपनों के लिए अपने समय बिताना, अपनों के लिए जो आप चाहते हो, जो लव करते हो, जो प्यार करते हो, उनके लिए जो समय देते हो, समय से बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं इस वर्ल्ड में। आप याद रखिएगा, चाहे वो वाइफ टू हस्बैंड, और हस्बैंड टू वाइफ, और पेरेंट्स टू द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन टू द टीचर्स, और मे बी etc etc. Okay, and whatever I'm telling, I beg your pardon with all of you, please don't take this is only the correct. Just you analyze after this session how many wrong things are there, how many right things are there. Leave the not acceptable things and take only the whatever possible good things which can be understandable to you. Okay, whatever I'm saying, it's not rule that it may be correct also. It's I'm sharing my experience. Okay, so now these things, the 4 things, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 4 जो चीज है, इसका जिसने स्ट्रांग पकड़ लिया, यही तो मेरे को गुरुजी ने 10 साल के एक्सपीरियंस लिया था। बीच में मैंने भट्ट सर को एक वीडियो भेजा है, जो हाउ द टीचर, हाउ द स्टूडेंट कैन ट्रेन इन फ्रंट ऑफ टीचर, वो आपको शेयर कर सकते हैं। ये तो युधिष्ठिर धर्मराज की बात है, जब द्रोणाचार्य की जो कुटीर में जो एक होमवर्क देता है, वो युधिष्ठिर ने बाद में क्या बताया उस वीडियो में है, वो आपको शेयर करेंगे। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई आई एम टेलिंग इज, students nowadays, that gap, I request all the parents, the gap between joining together in the evenings or morning with the children, by leaving your valuable lovable phones aside, please share your feelings, talk with them. What is their progress now? Don't pressurize them. What are marks you are getting? Nothing. Psychological disorders, if any, there, please set right to things. देर मन बुद्धि चित्त अहंकार सेट राइट करने के लिए आप कोशिश कर दीजिएगा। जब मैं
प्रैक्टिकली आऊंगा, मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा किस तरह से इसको प्रैक्टिकली करना चाहिए. ओके, if these 5 pillars are strong in your children, you need not worry about him. I sent my son to US 5 years back. All the samskara, he has also blessings of Guruji. After going to US also, I never thought of single day of any abhadrata for him. How he is doing, what he is doing, what habits he are doing, nothing. Never I thought of him, because already samskar karke bhej diya idhar se. He never touched non-veg. He never touched any alcohols. Entire 5 years period, he was virgin only there, because that's training happened is one. So like that, we can. This is the first prime responsibility of the first parent, mother and father only. If they don't spend the valuable time and observe them, आपको बहुत से काम हो सकता है, बहुत से कार्य हो सकता है. आजकल व्यस्त जीवन में आपको पैसा कमाने में या काम संभालने में कोई टाइम नहीं मिलेगा. फिर भी अगर आपके बच्चों को इस तरह से इस एंगल में देखना चाहते हैं, ये परफेक्ट कैरेक्टराइज्ड a citizen to the country, you must give the time. No option for it. At least 1 hour, at least 30 minutes per day, either morning or evening. By keeping all the other activities aside, this will give you no worth to the life, to the children. Okay, so now these things are no very important. These are the no inner engineering. We call it as the inner engineering. How to up jo invisible, there are 2 things are there, visible and invisible characters. Visible characters, all are things you are doing outside. Invisible, मन को देख नहीं सकते हो, बुद्धि को देख नहीं सकते हो, चित्त को देख नहीं सकते हो. अहंकार, अगर मैं बोल दूं आपकी टेस्ट कैसा है मेरे को बता दो, कोई नहीं बता सकता है, वर्णन कर सकता है. अगर मेरे को बोलेंगे तो दिखाओ, कैसा दिखाएंगे? इट्स कॉल्ड इनविजिबल. विजिबल मीन्स मेरा आंख कैसा है, मेरा नाक कैसा है, ये दिखा सकता हूं मैं. It's called in human in handling of life. प्राण को हैंडल करते टाइम पे we divide into 2, visible and invisible. This what I am talking is visible, कोई भी हैंडल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. A doctor can handle, a father mother can handle, but invisible के लिए एक सच्चा गुरु, सच्चा training is very important, because this will be possible only with meditation only. That's why our Hindu Sanatana Dharma में travel inside, go inside, because of this only. If you go to inside only, आपकी अनुभूति हो सकता है, मन की प्रवृत्ति, बुद्धि की प्रवृत्ति, ये सब अनुभूति हो सकता है. इसीलिए meditation is most important in our Indian life. That's why our Indian knowledge, our Indian culture, very top in the world. But unfortunately, by adopting the foreign policies, foreign principles, foreign food habits, foreign dress materials, all these things, we are deviated our Sanatana Samskriti. That is very, very, very unfortunate. At least some of the people. That's why this Happy Balanced Family national program, Admi Sudhar HBF, I targeted at least in my period 108 families. I want to make them happy HBF families. Okay, that I will tell you when this cannot be done in over phone. This can be done with the personal attendance only. I can take that much risk coming and training the people. This is a national work. This way I'm not participating in my country service. Okay, HBF and NBF form is going on. So now here that 4 things, if you have it, buddhi. I am telling to the children, my dear children, use your intellect brain more. You need not tell to lies to your father and mother. You need not tell lies to the teacher. You yourself, true self, withstand. You will become number 1, guts person. When you are following the truth, you will be gut person to do anything. If you are डर के संकोच करके आपकी जो है ये सब करेंगे तो कभी आप चैलेंज नहीं फेस करते, आपने अपनी जो गोल्स अचीव नहीं कर सकता है. Here now enters the one point. Next point enters here. To maintain all these things, prana required 3 vital things. 3 vital things. One is air, oxygen. Second is water. Third is food. 3 things, if you balance it,
your body will set right to do anything challenge. Now, for the past 25 years, after training the guru, I traveled, I don't know how many kilometers I traveled continuously for 10 days also. My body never stressed. Again, morning, I will be in work. This is the power of the handling of invisible powers. Okay. So now, food. Okay. I can't discuss about the oxygen and water. If you want to be best person in the society, if you want to be the best intellect in the society, if you want to be very good, whatever you want to be ichha shakti. Food is most important. How many people will believe this? Balanced nutrition food. Today, I definitely blame the food habits of Indian condition, the disastrous of COVID deaths because of loss of immunity. I definitely challenge. I am positive. On April 19th, to travel Benin country, I was positive on that day. To travel certificate is important. But within 5 days, I recovered. No doctor, nothing. Because it's a food. Food is the medicine actually. So food habits should be, that's why in HBF, food treatment, what food to be taken, what not to be taken is a very important course at that time to improve your intellect. All the things we have to do with the life or body, I am reminding once again, it's the improvement of buddhi only, not the man. They're all, if buddhi is correct, all the things will set right. So always, मैं रोज मेडिटेट करता हूँ, मैं तो सन्मार्ग है, मैं always to be very positive person to help the society. This is my prayer every day. I don't pray God anything, give me that, give me this, nothing. मेरी वजह से मेरा सोसाइटी में किसी को हानि ना पहुंचाए, मेरी वजह से मेरे को किसी को दुख ना पहुंचाए, यही तो मेरा प्रार्थना है. उसके लिए मेरा बुद्धि सही हो जाए. तो अब बुद्धि के लिए माइंड को क्या चाहिए? प्राणायाम चाहिए. डेली प्राणायाम करते हैं. कोई बड़ी जो है किसी के चक्कर में पड़ के बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ मत बनाना. वेरी सिंपल. That's why simplicity. All the big people and simplicity is most important. Okay, so for these things you have to separate only the buddhi, intellect. For that training is most important. बुद्धि इतना आसान से मानते नहीं है, क्योंकि बुद्धि हमेशा इसके वश में हो जाता है, मन के वश में हो जाता है. मन जो चाहता है वो करने में तैयार हो जाता है, तभी तो प्रॉब्लम होता है. The two incidents, because nowadays youngsters, they don't know what they are doing. गलती से करके प्रॉब्लम फंस जाते हैं. अगर जरा सा भी बुद्धि प्रयोग किया उस टाइम पे, बहुत से घटना से घटने जो प्रॉब्लम को टाल सकता है. मान लो किसी ने किसी गुस्सा में किसी मारने के लिए चला गया, अगर उस टाइम पे अरे ये तो ठीक है, ये इससे क्या फायदा है, आगे जाके इतना प्रॉब्लम होगा, तो वो रुक जाएगा. अगर उसके साथ मन के साथ ईगो जोड़ दिया, ईगो, दिस इज द गेम. ईगो अगर मन के साथ जोड़ लिया तो डिजास्टर्स, नेगेटिव ईगो डिजास्टर्स हो सकता है. अगर मन के साथ बुद्धि को मिला के अगर पॉजिटिव ईगो ज्वाइन कर लिया, दैट फेलो विल डू मिराकल्स. I can challenge it. Man is a free power. Buddhi separate them, just the things, and ego is preripit karta hai. These things to be separate in the boy. If they are correct, you need not worry about your children. He can do miracles. He can become whatever he want. Then क्या होता है, उसकी विचार और जो वाक और जो कर्म एक लाइन पे सीधी आ जाता है. फिर आपको किसी चिंता करने की जरूरत नहीं है. अभी आपसे चिल्ड्रन से पूछ लेना, उसके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स फैमिली. व्हेन यू आर बिकम ओल्ड, आस्क देम चिल्ड्रन व्हाट इज देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द फैमिली, फादर एंड मदर हु हैज गिवन बर्थ. Definitely there will be dilemma. At that time they said that they will put in hostel or in anath ashram, vruddhashram or anything, because they don't take that much responsibility, because they are not trained well properly. Because for that guts is only with the buddhi only. If that is trained, he can take decisions. Okay. So now, so these things I can train you when I come there. It's a complete session of 1 hour. How to tame these things. We never talk about how to get good marks and how to get this thing. Nothing there. बोलते हैं ना, कहावत है, घोड़ा को जबरदस्ती पानी मत पिलाओ, उसको प्यास लगाओ, खुद पिएगा. ये इसको हमेशा मानता हूं मैं. लड़के को उसको भूख लगा देना,
संस्कार अच्छे दे देना तो वो खुद दौड़ेगा। आज मेरा माताजी पिताजी कभी कुछ नहीं बोला, मेरा सौभाग्य है, मेरा कर्म फल के हिसाब से वाराणसी में गुरु मिल गया, मैं हो गया, इसलिए उसको मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं तो आई वॉज ऑल्सो वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नाउ आई एम ए बॉटनी स्टूडेंट, my all colleagues, it's not the question of marks and ranks. My top ranker still is in village. The top ranker is still in village. Now I am doing this much projects. It's your dream and desire, my dear children. That's why put a goal. What is in our life? Put a goal in chart in the life, in the wherever you are sleeping. कहाँ जो 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 सोते हो उसके जब दिन में सुबह उड़ते हैं ना, उसके सामने आपकी गोल लिख देना, उसके रोज देख लेना, वो आपको सोने नहीं देगा। सो यू मस्ट हैव ए गोल इन अवर लाइफ, व्हाट टू बी। विदाउट गोल यू कैन नॉट अचीव। स्पेंड योर टाइम, मच मोर टाइम विथ योर दैट गोल ओनली, इफ यू आर रियली वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। अदरवाइज कटा हुआ पतंग ही है, पता नहीं कहाँ जाके वो उड़ जाए, वो लैंड हो जाएगी डेफिनेटली। थ्रेड कट जो है, जो कटा हुआ पतंग ही बोलते हैं उसको। तो इसलिए आप जो टीचर है पाठ पढ़ाने के लिए, मम्मी एंड फादर है आपको मनी प्रोवाइड करने के लिए, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए, और आपके क्या चाहिए इतनी। इधर मैं अफ्रीका में देख रहा हूँ, अफ्रीका में जो कंडीशन है, बच्चे को 12 साल तक की पालते हैं, बास के बाद में घर से निकाल देते हैं, केवल 16 साल तक पढ़ाई के लिए उसको फीस देते हैं, बाकी कमाई पेट भरना ये सब काम करके पढ़ना पड़ेगा। फिर भी they are very happy. That responsibility starts. That's why everybody is happy here. They work hard. They are not dependent upon their parents, and they achieve their goals. Most of this is the French ruled country. They are going settled in France actually. Okay, so why I'm telling this thing? Be individual, intellect, and start working on yourself. What you want. Don't depend on anybody others. Depend what you want to depend, but what you depend on you, please don't depend on others. Do you understand? No, what you want to depend on others, just like money or other facilities, depend on parents, but what you depend on yourself, don't depend your talent, don't depend on others. You study, who is objecting you? Nobody is objecting. It's only your inner calculations, your mind running without breaking of buddhi. So we are going here and there. So practice that one. For that, buddhi will listen to only pranayama. Daily 10 cycles of pranayama will definitely help you. Within 40 days, you will find the difference. So I advise each and every kid, child or student, daily do 10 cycles of whatever prana you practice. That is most important, because air is only, you cannot compress it. You can only deviate और मोड़ ले सकते हैं, उसको जबरदस्त नहीं कर सकते हैं। सो प्राणायाम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाटरिंग टू द बॉडी मोस्ट इंपॉर्टेंट। I am checking the most of the people in Indian average 99 people, they don't consume 3.4 liter of water or 4 liter per body. बच्चों के लिए 3 लीटर, बड़ों के लिए 3.5, कभी पूरा नहीं कर सकते। It's very important. Then diet. If these 3 things are good, देन यू कर्म करने की योग्य बन जाएंगे। नहीं तो अगर बॉडी इधर सफर हो रहा है, कर्म नहीं कर सकते हैं। कर्म करना प्रकृति धर्म है, उसकी फल भोगना भी प्रकृति धर्म ही है। इसलिए सो पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संस्कार देना ही, टाइम देना ही एक जिम्मेदारी है। उसकी पढ़ाई, स्टडीज गिडीज आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इसे बोलेगा मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, और कोई काम कर सकता है। उसके पर्सनल इंटेंशन में वो इंटरेस्ट आना चाहिए, मैं अपने लिए पढ़ना है, तब जाके पढ़ेगा। आप चाहे लाख कोशिश कर लेना, वो अपनी मनमानी करेगा। तो इसलिए संस्कार और आपकी जो टाइम वैल्यूबल, बच्चों को जो प्यार है, बिना गुस्सा के, बिना झगड़ा करके, ये सब देना बहुत जरूरी है। बिकॉज प्राण की एक और लक्षण है, प्राण हमेशा लव, यानी लव एंड अफेक्शन, प्रेम की भूखा है प्राण। आई एम टेलिंग अबाउट द प्राण एंड नॉन लाइफ, लाइफ की हैंडलिंग बता रहा हूं। प्राण रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, प्राण रिक्वायर्ड वाटर, प्राण रिक्वायर्ड फूड, एंड प्राण रिक्वायर्ड love and affection. Okay, so if these 4 things are imbalanced, there may be some dosha, that's called dosha. So lifestyle will be affected. Okay, so these are the things, though
the two principles, that is life and non-life, how it can be thing, and the four pillars of the life, man, buddhi, chitta, hankar, is the invisible factors, how to handle it. For that, feeding, oxygen, water and food, and your emotional feeling, that's called love and affection. प्रेम से बात करना, जितना भी हो प्रेम से बात करना, गुस्से से नहीं, क्रोध से कभी कोई कुछ नहीं पाओगे। चाहे जितना भी आपको आपको जो इनकन्वीनियंट है, तो क्रोध को वश में, इसलिए आप वहां पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बच्चों के हैंडल करते हैं, चाहे वो कुछ मनमानी करे, कुछ भी आपको जो पसंद नहीं वो भी करते, तब भी आपको कुछ ना कुछ टेक्निक अपनाना पड़ेगा अपने रास्ते में लाने के लिए। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा छोड़ नहीं, सारे बच्चे मेरा बात नहीं सुन रहे, मैं इसको छोड़ दूंगा, नहीं हो सकता ऐसा। तब नागरिक बना नहीं सकते हो। ऐसा भी कुछ करके देखिएगा, अपने समय बिता के आपके बच्चों का जो परिवर्तन देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को तो पूरा 100% जो यकीन है, एटलीस्ट इन माय करियर आई वांट टू चेंज एटलीस्ट 101 बच्चे to as a good citizens of the country. That's my Hello. I think there is some network issue. No problem. Let us hold for a few seconds. Otherwise, we'll continue the further proceedings. और हम लोग अब इस सेशन को बंद करने के तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। डॉक्टर साहब को थोड़ा नेटवर्क इशू थोड़ी देर देख लेते हैं, अदरवाइज आपका पेरेंट्स का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम लोग। यस सर, यस सर। Just few seconds, otherwise we'll go for the further proceedings. Over to Rajeev ma'am, you can go for the further proceedings. Rajeev ma'am. Sure, sir. I would like to thank Dr. M.S. Rama Raju for his such good words. We are all absolutely delighted and motivated with his incredible words. Indeed, this will broaden our perspective to see our lives in a better light. Each word uttered by him, we count it as a pearl of wisdom. Sir is here, so please switch on the mic. Yes. Yeah, now it's okay. Now it's okay. Yes. Yes. The next, the last 3 points. Yeah, now I'm audible, sir. The last 3 points I want to cover. To conclude it, I want to cover the last 3 points. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Last, and this session, I want to conclude this session with the last 3 points now for the student. Hello, am I okay? Yes, sir. Yes. Yeah. The next point I want to tell the student, 3 principles follow your life. Even for big also they can follow 3 principles. That is, everybody study the science, and they have gone through the science of these 3 principles. Because here, not only studying in the books, you have to implement in the life also. The 3 principle is, one is Darwin principle, second is Newton third law, and third is Archimedes principle. How to implement in this life? If I hope you need not to if it is difficult to understand Vedic principles and Vedic Shastra, at least even elder people or students, whomever it may be, if they follow these 3 principles in their life, I don't think that they will do any mistake in their life. The 3 principles are, first principle is, I can say, Newton third law. How to implement in life? For every action, there is equal force of action. Okay? ये तो सभी लोगों को पता है, जो बोओगे वही काटोगे। ये तो हिंदी में बोलते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। Whatever action you are doing today,
If it is good work, it comes you 10 folds in a benefit way. If you do wrong thing, it comes 100 folds as a punishment. This is called prakritik dharma. This called is explained by the Newton third law. This is a science way. I took in this way to implement in my life also. That is called in Gita, everything is told, but many people will not understand. I converted it into science actually principles. These three principles. First is Newton third law, action for reaction. If you do good thing, 10 to 12 folds, even many folds will come as a positive. And if you do wrong things, 100 folds you will get the wrong things as a punishment. That is one thing. So try to do anything by keeping the mind in Newton third law. If it is good, okay. If it is wrong, that is also you can take decision. Second principle, Darwin theory. What did Darwin theory says? Adjust to the system. Wherever you are there, wherever you are, it is in class, it is in home, it is in any meeting, or wherever we go to the outside place, if you adjust to the system, two things will happen. One thing, either if you don't adjust to me, it's okay. If you don't adjust, two things will happen. Either you will eliminate the system or system will eliminate you. It's called dinosaur theory. They could not adjust to the system of that time condition. They eliminated from the earth. That is Darwin principle. I think all biological students, they understand this theory. This can apply in this. Suppose you are in the class, adjust to the class system only. If you are in class and adjust to the home system, you are eliminated. Or either you will eliminate or system will eliminate you. So wherever you go, please adjust to the system. If you don't like also, otherwise system will eliminate you. That is Newton third Darwin principle. Then last one, very funny thing. Many people will, whenever I say this, many people say, what is Archimedes principle? Law of buoyance, the ship theory है ना, जो जहाज जो पानी में तैरता है, उसका theory है, law of buoyance. I think in physics you can get that Newton Archimedes principle. How to apply in the system? What did say? When the law of buoyancy, the mass of amount is replaced in the water, the weight of the mass is replaced equal to the power of the equal weight of the water, the ship will be uplift. Otherwise, it will shrink. Understand? How to apply? इसको मैंने इस तरह से बदल दिया. Don't be burden to the system. I convert don't be burden. Suppose घर में है, एक आदमी कमा रहा है, 4 आदमी खा रहा है. That will not follow the Archimedes principle. If in the team 4 आदमी अच्छा काम करता है, 10 आदमी गप मारते हैं, ओके, वो कमाते नहीं है, वो वर्क में पार्टिसिपेट नहीं होता है, उस कंपनी डूब जाता है. So everybody, each and everybody, if they uplift the system will float, that go into the up. That's called Archimedes principle. Follow the Archimedes principle. Don't never ever burden to the system. Okay. If you follow these 3 principles, almost all everybody knows science principle. I'm applying it to the life actually. Newton third law, you never do mistake. And this Darwin theory, he will perfectly fit into the system. Otherwise, you will go out. Our system will send you out. Third, Archimedes principle. If you everybody uplift that system, either maybe school, either maybe home, either maybe factory, or anything will be uplift actually. Everybody will contribute their this thing. It's maybe nation. Anything can be uplift. Okay. So these 3 principles definitely I will advise to the students, not only studying in the books, apply in the life system. The same thing I follow in my life. Never can be faced problem, because with intellect only will work, never be trouble to anybody, never be no inconvenience to anybody. So all these things because of these 3 principles only. And the last 2 words I want to suggest to the people, which Guruji, my Swamiji first learned 2 things to me. The first words taught 2 things. Dependency always dangerous. Dependency always dangerous. 100%.
It doesn't mean that you are depending money for the fees and all to the parents. Will not come in this matter. Anything unnecessarily dependency 100% on others, on human beings, always dangerous. Depend on yourself. Second thing is अल्प स्नेह प्राण संकट. मूर्ख से स्नेह करोगे हमेशा प्राण संकट में आ जाएगा. ये पहला दोस्त जो शब्द मेरे को दिखाया, मेरे को सिखाया, वो आज भी मेरे कान में गूंजते हैं. ये दो चीज, क्योंकि आजकल संगत बहुत ही ठीक नहीं है. संगत में अगर मूर्ख मिले तुमको, वो जरूर आपको प्राण संकट में डालेगा. तो ये आप याद रख के अपनी अपनी जो स्टूडेंट लाइफ है, अप टू द 12th स्टैंडर्ड, बी ए परफेक्ट स्टूडेंट so that you can be eligible for your family to support well, for the society, for the nation. Then you will become the eligibility with the inner valuable qualities. You can eligible. Otherwise, with only degrees, only top ranks, only top this thing, never can be contribute to the nation. That's why 3 things I always suggest the people to develop. One is the most word you practice today onwards. Take responsibility. Either it is your studies, either it is homework, your teachers' words, your parents' words, or anything. Take responsibility. Never go away with the responsibility. अरे ये मैं नहीं कर सकता. Face it. 100 बार face it. 101 time, as Vivekananda told, 1000 times. You try. If not got, even 1001 you try, you have to. आपको जो है फेस द प्रॉब्लम. इसके लिए मेरे को एक और टेक्निक सिखाया मेरे को. अगर आपके पहाड़ के सामने खड़ा होके अगर उस पहाड़ आपके ऊपर गिरना चाहते हैं तो बोल दो, आओ गिरो मेरे ऊपर. ये बोलना चाहिए. दिस कॉल्ड गट्स. अगर गिरेंगे तो 2 ही चीज होगा. या तो आपकी धैर्य देख के वो पहाड़ रुक जाएगा, या गिरेंगे तो मर जाओगे. मरना तो एक दिन तो है ही है, तो दोनों में एक हो जाएगी. इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं. अगर आपकी धैर्य देख के हो सकता है पहाड़ भी रुक जाए, तो फेस द प्रॉब्लम, देन ओनली कम टू द टेस्ट. फेस करने से पहले डर जाओगे, अरे कैसा करो कैसा नहीं. आजकल बच्चों को देखते हैं, अरे एक मार्क्स फेल होने से, मार्क्स नहीं आने से भी वो बच्चे जो है गलत डिसीजन ले लेते हैं. क्या दुर्दशा है स्टूडेंट्स का. क्या वो मार्क्स ही आपका लाइफ डिसाइड कर रहे हैं क्या. Einstein is a number 1 thrown out candidate of the school, become scientist. नहीं हुआ क्या. मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है नहीं, एजीपीएस है नहीं मेरे पास, आज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ग्रुप में एक सर्विस नहीं दे रहा है. इस तरह से क्यों नहीं सकते हो. टॉप रैंक नहीं आया, उसको 2 मार्क ज्यादा लिया, इससे कौन सा कंपटीशन है. हमारा खेत में भी, हमारा जो एग्रीकल्चर में फार्मर का जो कंपटीशन होता है ना, आप बिल्कुल आप ही की तरफ होता है. क्या बोलता है उधर, सर बगल वाला के साथ 4 कट्टा डीएपी डाला, मैं 6 कट्टा डाल दूं. ये नहीं सोच रहे वो 10 कट्टा, वो 50 कट्टा पैडी पैदा कर रहे, मैं 55 कट्टा कैसा पैदा, वो नहीं सोच रहे. वो खाद डाल रहे, उसका परिणाम क्या हो रहा है. डीएपी यूरिया डाल के आपकी जो रोज खा रहे हैं ना चावल दाल, उसमें आ रहा है. उसके वजह से हमारा सेहत बढ़ रहा है. ये कौन देखेगा. आई एम वेरी वरीड अबाउट इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम, बिकॉज इतनी खाद इतनी जहर डाल रहा है, वो सारा आपके शरीर में पहुंच रहा है. ये सब इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब करेगा. दैट्स व्हाई एनबीएफ, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड फार्मिंग मैंने स्टार्ट किया. ये रेवोल्यूशन है, क्योंकि जब बैलेंस होगा फूड इन द सॉइल, अच्छी क्रॉप आ जाएगी. उस क्रॉप को जब आप खाओगे तो आपको भी न्यूट्रिशन आ जाएगी. और नहीं तो क्या, एक तरफ की फर्टिलाइजर ज्यादा आ जाएगी. अगर एक खाना में बार बार नमक 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 डालोगे, नमक की बॉडी में आपको प्रकोप मिलेगा. वेयर इज द बैलेंस, मेंटल बैलेंस, हेल्थ बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, वेयर इज देयर. आए तो गुस्सा तो बड़बड़ा के जो है झगड़ा करते, ये सब शांति भंग हो जाता है. जब शांति भंग हो जाता है, हैप्पीनेस खत्म होता है. डिसीज आना बहुत जरूरी है. तो नाउ द HBF व्हाई आई प्लान्ड इज हैप्पी बैलेंस्ड फैमिली मीन्स हैप्पीनेस. जो हैप्पीनेस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ. अगर आप हैप्पी है, हेल्थ अच्छा होगा. हेल्थ अच्छा होगा तो कर्म करने के मौका मिलेगा. अगर आप बीमार पड़े तो कर्म नहीं कर सकते हो. जब कर्म रुक जाएगी, बीच में कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर दोबारा उस कर्म करने के लिए आना पड़ेगा. इट लीड्स द लाइफ एंड डेथ साइकिल. दिस कॉल्ड इन वैदिक प्रिंस लाइफ एंड डेथ. इसीलिए आता है, बीच में जो लाइफ खत्म करके चले जाते हैं ना, तो फिर आना पड़ेगा. क्यों, बीमार पड़ गया शरीर, जो काम नहीं कर पाया. इसलिए हैप्पीनेस,
With happiness, all the inner balance of the hormones will work in a perfect way. So try to be happy always. Even dukh bhi ho, Excuse be me, try Dr. to Saab. happy. Because yeah, Dr. Saab, excuse me. Now, I would yeah, humbly request you to please yeah. conclude it, sir. Please conclude it, sir. Yes, sir. It's completed. So Thank this you. is the thing, last thing I was about to conclude only. So Yes. these things you just follow the student. I strongly advise in this session three principles. Follow the Newton third law, Darwin principle, and Archimedes principle. This is the my best session today for the students, so that they can practice in the regular life. They can achieve good things. Okay. Thank you very much, sir. So kind of you, Dr. साहब. आपने समय दान देके बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है जीआरडी Thank इंटरनेशनल you, sir. स्कूल को और रुद्रपुर को, इस एरिया के जो हमारे पेरेंट्स, बहुत दूर दूर के पेरेंट्स हमारे यहाँ बच्चे भेजते हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। और मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन टाइम कम है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। कोई बात ओवर नहीं, टू राजदीप मैम। कोई बात नहीं सर। राजदीप मैम, अब हम लोग प्रोग्राम को I 5 don't know. मिनट में कंक्लूड कर रहे हैं। पेरेंट्स प्लीज कीप द Yes, sir. पेशेंस, 5 मिनट्स की बात है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था, कुछ चीजें डॉक्टर साहब की समझ में नहीं आएगी, वो धीरे धीरे समझ में आएगी जब डॉक्टर साहब फिजिकली Yes. आएंगे या फिर बात करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से कड़ी जोड़ना पड़ता है। और ये Yes, yes, sir. अध्यात्म की बात है। अध्यात्म और Yes. साइंस, विज्ञान दोनों को समझना थोड़ा टिपिकल होता है, लेकिन फिर भी मैं Yes, sir. हाथ जोड़ के सभी पेरेंट्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आपने इतना टाइम दिया। अभी मदर्स के लिए खाना बनाने का टाइम है, बच्चों को Yes, डिनर का yes, sir. टाइम है। और मैं अपने पापा, तरफ से क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैं अपने तरफ क्षमा मांग, अगर कोई किसी को कष्ट हुआ या इस सेशन सुनने में मैं क्षमा चाहता हूँ। नो सर, तो नॉट समझने में अगर कोई नॉट एट ऑल। और पापा बाहर से आए होंगे, थक के आए होंगे, सो स्पेशल राइट। थैंक्स टू पापा, मम्मी, एवरीबॉडी, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब, Yes, you sir. are the inspiring personality for us. Now over to Rajdeep Thank ma'am. you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. I would like to again extend my gratitude. And your words are, we are like absolutely delighted and motivated with your incredible words. And I'm sure that this will broaden our perspective to see our lives in a bright light. Everything that you spoke today, we'll take it as a pearl of wisdom. Thank you so much, sir. Now I Thank you, request sir. the parents to share their feedback in the chat box. Many people admire the nature, but few makes it admirable. One such individual among us is our Vice Principal ma'am. She has a major contribution when it comes to nature. If I can specify, she has planted a large number of trees in our locality, which contributes in making our environment clean and healthy. The way she deals with people and calm she possesses tells us a lot about her spiritual comfort, which helps us to bring positivity in our lives too. I would request her to please address us. Thank you, Rajdeep ma'am, for such a motivational word for me. Thank you so much. Thank you, madam. Yeah. Good evening, madam. Good evening, sir. Good evening. How are you? Honorable Very Chief long time. Dr. Rama Raju, whom I already know, and really feeling blessed to have you here, sir. High and honored Chairman, sir, Vice Chairman, sir, Principal, sir, respected parents, respected coordinators, body teachers, and my dear students. A very good evening to you all. On behalf of GRD International School family, I extend my warm welcome to our today's resource person, Dr. M.S. Ramaraju, who is an extraordinary personality, a learned and intellectual person, which you must have felt by this time. The takeaway or the inputs he has given, few of the things I would like to read it out. Though it will, if I take all, then naturally it would take a lot of time, but few of the things which touched my heart, so that I would like to read it out for you, that to become success, you need a guru. Dr. Ramaraju says that to become success, you need a guru. And that Satguru, which Dr. Ramaraju got, and that turned his life. The person he was before meeting the guru, now he is not that. He changed. He is totally changed. And what he is, that you could see him now. He says that Dhyan plays a vital role
to be happy and satisfied in their life. So he advises to everyone, to the parents, to the students, and all of us to do the dhyan, which he has learned from his guru, his Satguru. He also Yes. advises the students that don't just copy from your neighbors. Know yourself first. See your inner quality. See what your Trishna is. Trishna, pyas, your lust for something, the thing you like, the thing you want to be. So that is within you. So please find out what is your Trishna and work accordingly to achieve your goal, to achieve your, to find your career in your life. He also said determination is very important to be success in the life. So sometimes what happens that, with a little bit of difficulty, you think, no, I'm not able to do this. This is not for me. I'm feeling discomfort. That should not be. One should be determined towards achieving the goal. Then only one can achieve it. This Dr. Rama Raju says. There is difference between technical knowledge and practical knowledge. That also he elaborated that how a technical knowledge and practical knowledge to be taken care of. Never think to give much comfort to the student. That also he has requested to the parents. Make them strong to face any tough situation. And many things he elaborated. It's not easy for me to pick all his work. The way he has connected the science and uh, the way of like intellectual, it is not so easy. So, like he said, that which one you could choose out of three: Shanti, Santosh, and Sukh. So, I requested the parents also to write the answer, but maybe I was late to do that. So, I did not get any answer for that. One thing at last I would like to take, which Dr. Rama Raju said, that buddhi, to control buddhi and man. So for the students, even we used to listen this thing, this one especially from our teacher, that your man will say that you wish to watch a movie today, okay? But it is not by skipping your class. You wish to watch a movie, but you should dare to talk to your parents and take permission, then you go. Not that you go quietly, because those days we used to bunk sometimes, and we also used to go to watch movie. Okay, that was the great way of getting some entertainment those days. So we used to do, so our teachers also used to explain this, so it touched my heart. And ego, he also explained about the ego, that ego is good, ego is bad. If you take it in a positive way, it's very good. If you take it in a negative way, so it's very bad. So many things are there. Dr. Rama Raju, I can say he's, Gyan ka Sagar, we call it. So he is like Gyan ka Sagar. So we have to pick which are the motives we want to take from there. So it depends on us that what we like, what we want to do. So thank you so much, Dr. Rama Raju. We are really blessed to have you here. We wanted to listen long and long for you, but it's already night and parents have some other schedule also with Yes, sir. them. Yes, sir. So, we had Yes. to conclude the session. So thank you so much My once pleasure. again, Dr. Rama Raju. And we wish that soon you, like pandemic situation is better now. It is controlled and you come to India, back from Africa, and you visit GRD. We will really feel Sure, blessed madam. that day. Yes, sir. It's my And due is last there. but not As per sir's request, my due is there to visit GRD. Definitely will come there. No, definitely I will come there. most welcome, sir. Most welcome. Last but not the least, we Sure. must thank our honorable principal, sir, for this webinar, and especially to invite you, sir. And Sure, I also sure. thank, I also must thank our honorable vice chairman, sir, for his unconditional support. He always supports to our ideas, whatever we like principal sir says, especially. So thank you so much, sir, for your support.
our respected parents. A big round of applause for our respected parents to be here with us from such a long time. Please clap for them. I must also thank the lifeline of our all school function, Muhammad Sajid sir, Ms. Rajit ma'am, IT coordinator, Mr. Harpreet Singh, Mr. Aswani Yadav sir, GRD International School, and all the teachers and all the students and the parents of GRD International School family. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Over to you, Rajdeep ma'am. Thank you so much, ma'am, for your kind words and your valuable suggestions. An institute stands strong with the strength possessed by its head or the flag bearer, and a vice chairman sir's strength lies in his humbleness, kindness, and flexibility, which makes us all comfortable and develops a sense of belonging here at GRD. I request our vice chairman sir to deliver his vote of thanks. Please, sir. Good evening to all. So, Good evening, sir. Respected Chairman, sir, Vice Principal, ma'am, Principal, sir, respected teachers, coordinators, and I, on behalf of GRD International School family, a big thanks to Dr. M.S. Rama Raju, and we can't say, we don't have words to say to thank you for the valuable experience and the things which you have taught us. करे तो कुछ अलग, जियो तो कुछ मकसद से. So yes, sir. it really means a lot, and मैंने आपसे इतना कुछ सीखा है that cannot be sum up in a 5 or 10 minutes. So thank it's you all so by much, Guru's sir. grace, sir. Guru's Kripa. Yeah. Guru's So Kripa. definitely we'll apply this in our school also, and we as a GRD Inter School family, all the teachers, students, and dear parents. So definitely we are on the path, and God, Guru Ramdas, blessing of Guru Ramdas ji, that they are sending a person like you as a motivating us. And thank you so much, sir. Thank you so much, parents, for giving so much valuable time. Thank you, teachers. Thank you, students. So, and last, the 3 principles which you have taught us, that is the Newton third law, Darwin principle, and Archimedes principle. So definitely it will help us. Thank you so much. Yes, sir. And lot many things we have learned from you. And Yes, sir. I can't stop myself, but the time is not allowing us to go more ahead. So I'll request you whenever you come to India, and please visit once, and we wish to meet you, sir. And My great thank pleasure, you so sir. much. It's sure. Thank you. Yes. Welcome. So thank you, parents. Thank you, teachers. Thank you, all of you. Thank you. Now over to Rajdeep, ma'am. Thank you so much, sir, for your kind words. Now, I would request all the parents, if they wish, they can share their feedback in the chat box once again if they did not do it earlier. Otherwise, thank you so much for joining this session and being here till the last. You may leave now. If you have any kind of feedback or anything to say, you may type in the chat box. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Dr. M.S. Rama Raju, sir, for joining Thank you, us madam. today. I'm also grateful for the session. I'm also grateful, and thank you very much for giving me the opportunity. Namaskar, sir. Namaskar, Thank sir. you very much. We have taken a lot of your time. No, sir. It's We'll डॉक्टर साहब Namaste, sir. आपको जी साष्टांग अभिनंदन, वंदन एवं नमन। आज आपने जो अध्यात्म और संगम से जो स्नान करवाया है, तो ऐसा लगता है आत्मा धुल गई है, आत्मा की एक परत क्लियर हो गई है और आजीवन आप मार्गदर्शन अपेक्षित रहेगा।
और आज जो आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रिंसिपल सर, थैंक यू सतनाम सर। जब मेरा गुरु ने स्नान करवाया, मैं सबको स्नान करवा दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू। Gentleman one who is speaking now, he's our librarian. And okay. Nice. And he has lots of knowledge because his library keeps on reading books और पढ़ते हैं और बच्चों को सिखाते रहते हैं बहुत अच्छी and he is not only librarian, वो IT का भी काम कर देते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और he does not require appreciation. वो चुप अंदर background में he keeps on helping me और सबसे बड़ी बात है he does not require appreciation. उनको appreciation ही चुप से करते रहते हैं। तो that I mean, as our Vice Chairman sir was telling, we are lucky that Guru Ram Das ji, the full form of GRD is Guru Ram Das ji. He keeps on sending good people to GRD. So that way, we are happy that we have good team of teachers. No? Very good. And we need your blessings. Please pray for Thank GRD. You, please sure, sir. Sure. Prayers will be heard. And we'll be in touch, sir. We'll be in touch. No? Thank you, sir. Okay. Right. Thank you. Thank you so much. Good night. Welcome. Good night. Good night, sir. Thank you so much, sir. Radhip ma'am, just check that all have left. Few of the parents are still here, students of the parents. I request all the parents and students that the session is concluded. You may leave one by one. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you for joining. If not, at the end, Harpreet sir can do the needful at the end, and we people will exit at the end. I must thank the team, Rajdeep ma'am, Harpreet sir, Sajid sir, Shelly ma'am, and all IT team teachers for joining. Okay, and let's hope in the series you'll get the benefit. Okay, at once you may not instant benefit you may not get from this such session because these are very delicate and very sensible things. तो फटाफट इसका नहीं मिलता है फायदा, धीरे धीरे मिलेगा. So anyway, it's the beginning and you have cooperated. And let's hope ultimately all of us, including our students, get the benefit. So thank you so much. Meeting over हो चुका है, सेशन ओवर हो चुका है. पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप धीरे धीरे एग्जिट करें और आपने बहुत टाइम दिया, हमने आपका बहुत टाइम लिया, आपने जैसे कि बात हो रही थी समय दान की. तो थैंक यू सो मच पेरेंट्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग अस सो मच ऑफ टाइम. So all the parents are removed now, only teachers are there. Yes, now we can also exit one by one, and you can exit. I will exit at the end. Okay. And thank you, Vice Chairman sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, teachers. Good night, everyone. Good night. Good night, ma'am. Good night, sir. You can exit Thank now. you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Bless It was everybody. very wonderful session. Good night, sir. Good night, ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Good night, sir. Good night, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. Good night, sir. Good night, ma'am. God bless everybody. Good night, everyone. Thank you so much. Good night, everyone. Good night, sir. Good night. Thank you. Thank you. Good night, sir. Good night. Now I also exit. Thank you so much. God bless everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Good night, everyone. Good night, ma'am.